everyone and welcome back to my channel. So today's video is a vlog video. Today I'm just vlogging a bit because मैं मार्केट जा रही हूँ, कमला नगर मार्केट. और मैं मार्केट बहुत टाइम बाद जा रही हूँ बिकॉज मैं ऑनलाइन शॉपिंग की इतनी हैबिचुअल हो गई हूँ कि मैंने ऑफलाइन शॉपिंग करना छोड़ ही दिया है. बट टुडे इज़ द डे व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट टू डू द शॉपिंग अ बिट. और मुझे एक दो काम और है, सो आई रियली हैव टू गो टू द मार्केट टुडे. And yeah, today we are just shopping a bit, enjoying ourselves and just having a fun day. So we are going to Vaishno Devi this upcoming week and I really have to shop clothes for that place. एंड विंटर स्टफ़ लेना है. आई रियली हैव टू स्टिक टू द थिंग कि मुझे विंटर स्टफ़ ही लेना है और समर स्टफ़ नहीं लेना है बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ स्टफ़ जो कि मैंने पहना भी नहीं है एंड आई जस्ट कीप ऑन बाइंग एंड बाइंग एंड बाइंग विच इज़ यूजलेस. सो या आई रियली हैव टू बाय विंटर स्टफ़ ओनली. एंड मेरे को एक दो काम और हैं मार्केट में, सो वी विल फिनिश दैट टुडे. सो टुडे विल बी अ वेरी फन डे एंड मी टाइम वाला डे है आज. आई विल एंजॉय विद माई सेल्फ, शॉप अ बिट एंड आई रियली हैव टू गो टू द सलोन एज वेल क्योंकि मुझे अपना रूट टचअप वगैरह कराना है. सो आई रियली हैव टू डू दैट ऑल्सो एंड फिक्स माई हेयर. एंड मेरे को ये स्टड्स भी चेंज कराने हैं. मे बी आई विल डू दैट टू. So yeah, today will be a very long day and very fun day as well. So now let's just start this video. So firstly I went to the Gitanjali salon क्योंकि मुझे हेयर कट कराना था और रूट टचअप भी कराना था. And on that day I don't know why Gitanjali salon was full on packed. काफ़ी भीड़ थी, so I just have to wait for 15 to 20 minutes. मैंने around 20 minutes wait किया and then I just got my turn. Then मैंने अपना रूट टचअप कराया and हेयर कट कराया. So this is how my hair looks. I was loving the look. मैं इतना शॉर्ट कभी नहीं गई बट मुझे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का मन कर रहा था और मेरे हेयर काफ़ी डैमेज भी थे नीचे से. So I just wanted a good haircut and that's why I went this much short. So I'm done with my hair color as well as the haircut. मैं इतना शॉर्ट कभी नहीं गई but I'm loving the look a lot. So अब मेरा चश्मा गया है टूट. I don't know how. तो मैं उसको फिक्स कराने ओमकार ऑप्टिकल्स पे जा रही हूँ एंड आई विल गेट इट फिक्स एंड देन हम मार्केट जाएंगे बिकॉज मुझे कुछ दिखेगा नहीं अगर चश्मा नहीं होगा तो. So that's why I'm going there first and then we'll go to the Kamla Nagar market. So I reached to the optician and वहाँ पर मेरा चश्मा ठीक हो रहा था and in the meanwhile I just did a little bit shoot of my hair. So after that I went to the Kamla Nagar market and काफ़ी packed था market. I don't know why उस दिन क्या था बट काफ़ी भीड़ थी मार्केट में. तो आई वॉज जस्ट रशिंग क्योंकि मैंने अभी शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की थी. सो आई जस्ट वेंट डायरेक्टली टू द इंसेंस स्टोर और वहाँ पर ये 30, 40 और 50% ऑफ चल रहा था बट लिमिटेड स्टॉक था इन विंटर वेयर. तो उसमें से सिर्फ मुझे 2 ही पीसेस पसंद आए. समर कलेक्शन वहाँ पर ज़्यादा था तो जस्ट मैंने वो 2 पीसेस ट्राई किए. उनमें से एक मैंने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था. बट द सेकेंड वन विच आई चोज इज़ दिस वन. दिस इज़ द पिंक वन और उसके ऊपर ऐसे ही वाइट फ्लावर्स बने हुए हैं. आई वॉज रियली लाइकिंग दिस और 30% ऑफ पर भी था. लाइक बाय वन गेट 30% ऑफ ऑफर था. सो देन आई जस्ट गॉट दैट वन पीस. उसके बाद मैंने इसकी बिलिंग कराई. सो आई वेंट टू इंसेंस और मैंने एक टॉप लिया है बट मुझे एक दो टॉप और लेने हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू मैक्स एंड H&M पे मैं गई थी बट वहाँ पर कुछ अच्छा है नहीं. सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू मैक्स एंड सी एंड लेट्स सी कि क्या क्या अच्छा वहाँ पे मिलता है बिकॉज आई रियली हैव टू बाय 1 or 2 more stuff बिकॉज अब और टाइम है नहीं कि मैं कभी और आ जाऊँ. आई हैव फ्यू फंक्शंस टू अटेंड एज वेल. सो या लेट्स गो टू मैक्स. एंड देन आई वेंट स्ट्रेट टू द मैक्स स्टोर बट मैक्स ने भी मुझे इस बार डिसअपॉइंट कर दिया. लाइक क्यों होता है कि जब आपको जल्दी हो तो आपको कुछ भी जल्दी से पसंद नहीं आता. एंड द सेम हैपन टू मी एज वेल ऑन दैट डे. देन उसके बाद मैंने फिल्म ही नहीं किया बिकॉज आई वॉज सुप्रीमली फेड अप and a little bit irritated as well. So after that I just went straight to home. And yeah, that's it for this mini vlog. And yeah, thank you for watching. If you like it then don't forget to like, share and subscribe my channel. And I'll see you guys super soon with a brand new video. Till then, bye bye, take care.